हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिफ्टेक सिंप्लीफाइड। मेरा नाम इमरान अजीज है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पार्ट 21 में क्वेश्चन नंबर 201 टू 210। आई होप लास्ट वीडियो से आपने लर्निंग हासिल की होगी, जिसमें हमने मेनली वियर्स के बारे में और बैराज वगैरह की डिफरेंस के बारे में पढ़ा था, और इसके अलावा हमने खोसलास थ्योरी को भी, उसकी एग्जाम्पशंस वगैरह के बारे में डिस्कशन की थी। आज की वीडियो में भी हम फर्दर इस टॉपिक को लेके आगे बढ़ेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखें और इसको लाइक करें, शेयर करें और सिफ्टेक सिंप्लीफाइड को जरूर सब्सक्राइब करें। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, जहां पे एक प्रेजेंटेशन के थ्रू फर्दर आपके साथ ये क्वेश्चंस हम शेयर करेंगे। हमारे चैनल के ऊपर पब्लिक प्रोक्योरमेंट की वीडियोस भी अवेलेबल हैं, सो डू वॉच दोज वीडियोस एज वेल एंड एनहांस योर कैपेसिटी रिगार्डिंग पब्लिक प्रोक्योरमेंट इन पाकिस्तान। सिविल इंजीनियरिंग बोनस एग्जाम MCQs इन इरिगेशन इंजीनियरिंग पार्ट 21 में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 201 टू 210। सो क्वेश्चन नंबर 201 says that according to Khosla's theory, the exit gradient in the absence of downstream cutoff is option A 0, option B unity, option C infinity, and option D is none of these. Exit gradient in the absence of downstream cutoff is 0. A is the correct answer for this question. Question number 202. A hydraulic jump is formed when option A subcritical flow strikes against a supercritical flow, option B a supercritical flow strikes against a subcritical flow, option C the two flows of supercritical velocity meet each other, option D the two flows of subcritical velocity meet each other. So again B is the correct answer. जब सुपर फ्लो स्ट्राइक करता है सब फ्लो के साथ, सब क्रिटिकल फ्लो के साथ, सो देन हाइड्रोलिक जंप क्रिएट होता है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 203, फॉर लो नेविगेशन डैम्स द टाइप ऑफ गेट यूज्ड इज ऑप्शन ए रोलिंग गेट, ऑप्शन बी बियर trap gate, option C vertical lift gate, and option D is drum gate. लो नेविगेशन गेट, लो नेविगेशन डैम्स में जो गेट यूज होता है दैट इज कॉल्ड, ऑप्शन बी इज करेक्ट, विच इज बियर ट्रैप गेट, बियर ट्रैप गेट। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 204, trough stage of river is most suitable location for diversion headworks, option A yes, option B is no. So yes, it is correct. Trough stage of the river जो होती है वो most suitable location या time होता है जहाँ पे आपने diversion headworks देना है। Yes, A is the correct option for this question. 205, a canal headwork is in rocky stage of a river is not suitable because, option A more cross drainage works are required, option B a costly head regulator is required, option C more falls are necessary to dissipate the energy, option D all of these. So all these are correct. जब आपका कैनाल हेडवर्क रॉकी स्टेज ऑफ रिवर में हो तो ऑफ कोर्स वहां पे फ्लो बहुत शार्प होगा, तेज होगा, सो मोर क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स वुड बी नीडेड, हैवी कॉस्ट ऑफ हेड रेगुलेटर वुड बी रिक्वायर्ड, और मोर वियर्स आपको ज्यादा देनी पड़ेंगी अब वो उसका फ्लो रोकने के लिए, मोर फॉल्स वगैरह देनी पड़ेंगी। सो डी ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। 206, द crest level in a barrage is kept at a dash level, option A low, option B high, option C moderate. Crest level in a barrage is kept at a low level. A is the correct option for this question. 207, the crest of under sluices should be lower than the crest of head regulator if silt excluder is provided by at least, option A 1 to 1.2 meter, option B 1.8 to 2 meter, option C 2 to 2.5 meter, and option D 4 to 5 meter. The crest of the under sluices should be lower than the crest of the head regulator by at least 1.8 to 2 meter. B is the correct option for this question. Question number 208, the opening in the weir wall with a crest at low level on the canal side is known as under sluice or scurrying sluice. A correct, B is incorrect. So yes, A is the correct option for this question. उस opening को, opening in a weir wall के अंदर जो opening होती है with a crest at low level on the canal side is known as under sluice or scurrying sluice. A is the correct option for this question. 209, the function of a scurrying sluice is, option A to control the silt entry into the canal, option B to scur the silt deposited in the riverbed above the approach channel, option C to pass the low floods without dropping the shutters of the main weir, option D all of these.
So all these again are the correct options. D is the correct option for this question. All of the above is correct. 210. For smooth entry, the regulators are aligned at an angle of dash to the water. Option A 60 degree, option B 80 degree, option C 110 degree, option D 130 degree. So for smooth entry, the regulators are aligned at an angle of 110 degree to the water. C is the correct option for this question. So friends, this was part 21 of our ongoing video series इन इरिगेशन इंजीनियरिंग, जिसमें हमने 10 MCQs आपके साथ शेयर किए, मेनली डैम्स और वियर्स, उसके अलावा फॉल्स के बारे में, फ्लो के बारे में डिस्कशन हमने की। आई होप आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की होगी, और हमारी अगली वीडियोस में फर्दर 10 क्वेश्चंस मजीद आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।